हम पैनासोनिक कंपनी के फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में बेरिंग से होने वाले साउंड को दूर करेंगे, जिसके कारण ड्रम में साउंड आ जाता है। हमने वॉशिंग मशीन स्टार्ट किया है, आप सुन सकते हैं वॉशिंग मशीन में साउंड आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम वॉशिंग मशीन के सारे कंपोनेंट को खोलेंगे। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में लोड के लिए जो स्टोन लगा हुआ है उस स्टोन को हम अलग करेंगे। डिटर्जेंट केस को हम बाहर निकालेंगे। स्पेनर की मदद से हम मेन डोर को अलग करेंगे। ड्रेन असेंबली बॉक्स को हम अलग करेंगे। टॉप कवर के स्क्रू को हम खोलेंगे। मेन पीसीबी के सारे कनेक्टर को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। इनलेट पंप या इनलेट मोटर की जो असेंबली है उसे भी हम अलग करेंगे। फ्रंट बॉडी के सारे स्क्रू को हम रिमूव करेंगे। लॉक असेंबली को हम रिमूव करेंगे। बॉडी से हम डोर गास्केट को अलग करेंगे। हीटर कॉइल के सारे कनेक्टर को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। फ्रंट बॉडी के बैलेंसिंग स्टोन को हम बाहर निकालेंगे।
मेन ड्रम असेंबली को हम बाहर निकालेंगे। मेन मोटर को हम बाहर निकालेंगे। ड्रम असेंबली के सारे बोल्ट को हम ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं, हमें बेरिंग टब में सेट करके पुरानी बेरिंग से प्रेस करके उसे बैठाना रहेगा। आप देख सकते हैं, इसमें दो बेरिंग रहती है, एक इनर साइड और एक आउटर साइड। यह दो बेरिंग लगाने के बाद हमें इसमें ऑयल सील लगानी पड़ती है।
स्टेप बाय स्टेप सारे कंपोनेंट को हम फिर इंस्टॉल करेंगे। मेन टब असेंबली को हम बॉडी में इंस्टॉल करेंगे।
बैलेंसिंग स्टोन को हम फिर से इंस्टॉल करेंगे। डोर गास्केट को सही तरह से हम फिक्स करेंगे।
मेन पीसीबी के सारे कनेक्टर को हम स्टेप बाय स्टेप केयरफुल कनेक्ट करेंगे। सारी असेंबली कंप्लीट इंस्टॉलेशन करने के बाद हम वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करके चेक करेंगे कि इसमें कोई एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं आ रहा है। वॉशिंग मशीन अब अच्छी तरह से काम कर रही है। इसमें जो बेरिंग का साउंड था वह अब दूर हो गया है। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।